Very good morning, students. Here is a lesson and question answer of lesson number 12 from your English textbook. That is why English is so hard. Can you see why English is so hard? So already I have given you the explanation of this lesson through a YouTube. Now let's do the meanings. See your meanings. You have to write it in your notebook, and the question answer which I will give you to write in your notebook. Is that clear? You have to copy it down in your book. So there are two meanings over here. Lone, the only one in a place, and the trickiest, most difficult to do or deal with. Understood? Now here we come with a question answer. You have to write singular as well as plurals. Okay. Now what is the question? Write the singular of the following. Here is plurals and singular. You have to write the singular. Okay. First one is oxen. So the singular word of oxen is ox. Mice, mouse. Men, man. Fit, foot. Media, medium. Now here in second question, write the plurals of the following. Here the singular is giving, you have to write the plurals form. See, boot, boots. You have to join S over here. House, houses. Here you have to join ES enough to make a plural form. That, those. Pan, pans. Hat, hats. Now see here, question number 3. List the funny words you find in this poem. There are few funny words in the poem. If you have read in the poem, then you can find that words. Okay. So the answer is highs, comma, she's, shis, comma, shim. Okay. Now question number 4. A pronouns in a word that is used in place of a naming word. नेमिंग वर्ड के जगह में आपको क्या लिखना है? प्रोनाउन लिखना है. प्रोनाउन आपको मैंने ग्रामर में सिखाया है. राइट व्हाट यू विल यूज फॉर मैरी, मैरीज एंड द मैरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. मैरी इज माई फ्रेंड. फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? मैरी इज माई फ्रेंड. सेकेंड में दिस इज मैरीज बुक. थर्ड में आई वॉन्ट टू रिटर्न इट टू मैरी. तो आपको क्या करना है? नेम के जगह में प्रोनाउन यूज़ करना है. तो कैसे लिखोगे? शी इज माई फ्रेंड. मैरी इज अ गर्ल. ओके, so you have to write here she. Second, this is her book. Mary's notebook लिखा हुआ है, तो उसके जगह में क्या लिखना है? This is her notebook. ठीक है. थर्ड में क्या लिखना है? I want to return it to her. Understood? Now next question. Pick out the rhyming word in stanza 5 and 6. If your textbook is there, then take out your textbook. Stanza means what? Paragraph. Okay. तो फिफ्थ और सिक्स के पैराग्राफ में जो राइमिंग वर्ड्स है वो आपको नोट डाउन करना है. अभी यहाँ पे जैसे स्टांजा फिफ्थ में दिया है, दैट, हैट, दोज, होज. दिस आर द राइमिंग वर्ड. स्टांजा 6 में ही, शी, हिम, शिम. अंडरस्टूड? Can you see? Now
here is open-ended question. What make English the trickiest language? So the answer is a peculiar spelling. What is the meaning of peculiar? Peculiar means अजीब स्पेलिंग, जो अजीब वर्ड्स होता है. ठीक है. डिफरेंस रूल्स फॉर सिमिलर थिंग्स. ओके. एग्जाम्पल, चेंजिंग for the singular to the plurals. Many meanings for a single word make English a very tricky language. The way a word is written is sometimes different from the way it is pronounced. Sometimes two words may be pronounced in the same way but have different spelling and meaning. अब यहाँ पे क्या दिया है कि इंग्लिश को इतना ट्रिकिस्ट लैंग्वेज क्यों बोला जाता है. आप देखोगे तो इंग्लिश जब आप लिखोगे तो वहाँ पे कुछ स्पेलिंग जो होता है वो राइटिंग फॉर्म में अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन फॉर्म में सेम लगता है. ओके. तो इसके वजह से इंग्लिश बोलना या लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इज़ दैट क्लियर? तो यही लेसन में यही सब समझाया गया है और यही बताया गया है. ओके. So you have to write down all these question answer which I have given. Is that clear? You have to do all the question answer in your notebook. Till then, thank you. Take care. Stay safe and stay at home. Right, students?